Total energy in SHM. कोई भी पार्टिकल जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है. वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी वाई. जब भी पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से दूर जाता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मेन पोजीशन, then it possesses potential energy, and because of the velocity of the particle will have kinetic energy. Potential energy किस लिए है? This is because of displacement of the particle from main position. Displacement of the particle from main position. क्योंकि जब पार्टिकल मेन पोजीशन से दूर जाएगा तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्सेस लगेंगी जो कि उसे वापस खींचने की कोशिश करती हैं, और उसी की वजह से पार्टिकल पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी. दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू या बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ओके, अब हम वन बाय वन करके इन दोनों के लिए डेरिवेशन करेंगे. आई विल स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी. थोड़ा आसान होता है तो काइनेटिक एनर्जी से शुरू करेंगे. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ई के हाफ एम वी स्क्वायर. क्या आप लोगों को वी का फॉर्मूला याद है? हम लोगों ने वी का फॉर्मूला velocity of a particle executing SHM पढ़ रखा है. That was a omega cos omega t. Therefore, अगर हम इस v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इस v की वैल्यू जो हमने पहले से ड्राइव कर रखी थी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज इक्वल टू हाफ एम. वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर. यहाँ से ई के की वैल्यू यानी कि किनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखी जा सकती है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. वैसे तो रिजल्ट यहाँ तक ड्राइव हो गया, बट इसको एक्सप्रेस करने के दो मेथड्स होते हैं. तो एक इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और दूसरे मेथड की तरफ भी चलेंगे. ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है इसे मैं एक्सप्रेस करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी में. मीन्स अभी हम ई के की वैल्यू लिखेंगे, किनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. मेरे ख्याल से ये स्टेप सबको क्लियर होगा. एंड नाउ ई के में बी रिटन एज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओके, एक बार रिकॉल करिए, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन क्या लिखी थी? पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. एक्चुअली अब मैं यही चाहता हूं कि इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू थी उसे यहां पर पुट करो. यहाँ से a आएगा, यहाँ से साइन ओमेगा टी. अगर ध्यान से देखें तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा. इतना हिस्सा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट रिप्रेजेंटिंग वाई स्क्वायर? तो अभी मैं इस एक्सप्रेशन को वाई स्क्वायर की टर्म्स में लिखूंगा. मीन्स वी कैन राइट डाउन ई के किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इस दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से, राइट साइड वाली में से आप किसे कॉमन रख सकते हैं, वी कैन कीप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन। हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज अनदर वे टू एक्सप्रेस किनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया किनेटिक एनर्जी के लिए, और दूसरा एक्सप्रेशन हमने जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी यहाँ पर आ गया। These two expressions represent kinetic energy possessed by a particle executing SHM। अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। देखो बेटा, हमने SHM में ये पढ़ रखा है कि कोई भी पार्टिकल जो SHM एग्जीक्यूट करता है उसकी एक्सेलरेशन है, इट इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू y, where y is displacement, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से हमने फोर्स भी लिख रखी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस m ओमेगा स्क्वायर इनटू y। माइनस साइन क्या शो करता था कि जो एक्टिंग फोर्स है इट इज रीस्टोरिंग फोर्स। F is restoring force। ओके, अब अगर हमें थोड़ा सा वर्क डन करना हो टू डिस्प्लेस दिस बॉडी थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy अगेंस्ट दिस फोर्स, तो वो वर्क डन कितना होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिख लीजिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर द एडिशनल very small displacement dy, small amount of work done for the additional very small displacement dy against the restoring force will be given by, against the restoring force will be given by dw is equal to f into dy with a नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बेसिकली विल स्टोर इन सिस्टम एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो f की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी, ये वाली f की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस साइन वैसे ही कैरी करते आएंगे। अब ये माइनस साइन यहाँ पड़ा था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर y इंटू dy। अगर टोटल वर्क डन करना हो, तो फाइंड आउट करना हो, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो हम लिख पाएंगे m ओमेगा स्क्वायर एंड लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dy, limits are taken from 0 to y। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया, w इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y इज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू y। दिस वर्क डन विल स्टोर इन सिस्टम एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल हम रखेंगे EP। तो ये कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2। मैं साथ के साथ लिमिट्स पुट कर दूं, माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। तो इट मीन्स दैट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2। ओके,
हम लोगों ने y की वैल्यू पढ़ रखी है, y इज इक्वल टू a sin omega t, where a represent amplitude. Amplitude means maximum displacement from mean position. Omega represent angular frequency, है ना? ओके, अब y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके एक और मेथड से, दूसरी अल्टरनेटिव वे से पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे. हाफ m ओमेगा स्क्वायर, जब y की वैल्यू पुट की y स्क्वायर हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. मीन्स हमने फिर से पोटेंशियल एनर्जी को, जैसे पहले किनेटिक एनर्जी को किया था, अब पोटेंशियल एनर्जी को भी दो मेथड से एक्सप्रेस कर दिया. एक बार इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, एंड दूसरी बार इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो लिखिए टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM. टोटल एनर्जी E will be equal to potential energy plus kinetic energy, EP plus EK. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने क्या लिख रखी है यहाँ पर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. किनेटिक एनर्जी की वैल्यू, मेरे पास स्लाइड चेंज हो चुकी है, आप अपनी नोटबुक पे देखिए, वहां पर सिर्फ एक ही फर्क था, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया, वहां पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी था. मीन्स आप लिख सकते हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. जब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और वी विल लेफ्ट विद साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी in bracket, and this sum will be equal to 1, and hence we can write down total energy is given by half m omega square into a square. And please notice that total energy does not depend upon time. ठीक है, नोटिस करो, E does not depend upon time. मीन्स टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी. टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स. अब हम लोग एनर्जी के लिए डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन पॉइंट नंबर 1. अगर मैं बात करूं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वो टाइम जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर होता है, तब पार्टिकल के पास कौन कौन सी एनर्जी कितनी कितनी रहती है. जब मैं t को 0 पुट करता हूं तो इस एक्सप्रेशन में, किनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में देखिए हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 0. कॉस 0 कितना होता है, 1. यानी कि उस समय हमारे पास what will be value of kinetic energy, it will be half m omega square a square into 1, that is EK. Kinetic energy will be given by half m omega square a square. And what about potential energy? If I substitute 0, t is equal to 0 in the expression calculated for potential energy, this term will be, sin 0 will be 0, and hence potential energy will be 0. Means EP will be given as half m omega square a square into 0, that is EP is equal to 0. So notice, from equation number 1 and 2, we can conclude that at mean position, particle will have only kinetic energy and there will be no potential energy at mean position. Okay,
At mean position, particle will possess only kinetic energy and there will be no potential energy at mean position. Okay. Now, let's go for similar discussion at extreme position. Extreme position means when time is t/4. You must recall that a particle takes time t/4 to reach from its mean position to its extreme position at time t/4. We can write down EK, kinetic energy possessed by particle executing simple harmonic motion. We should write down here cos square omega t. What is omega? 2 pi by t into time period is t/4. Okay. What I did, I am just using this relation here, and at the same time I am substituting value of omega. This is omega and this is value of time t we have just taken into consideration, that is at extreme position. Okay. Now this t and t will cancel out. This t and t will cancel out, and 2 and 4 we will left with 2 and we will have pi/2. Means we have EK kinetic energy is equal to half m omega square a square into cos square pi/2. Cos pi/2 is 0. It means that this term will be 0. That is, this implies that kinetic energy will be 0. At extreme position, kinetic energy of a particle executing SHM will be 0. And what about potential energy? EP. EP will be given by half m omega square a square into sine square omega t. Omega is 2 pi by t into time is t/4. Okay. Now t and t will cancel out. Similar discussion that we have just done for kinetic energy, and 2 and 4 we will left with 2. We will have sine pi/2. What is sine pi/2? Sine 90. Sine 90 is 1. It means that potential energy will be given by half m omega square a square into sine square 90 means 1. Means potential energy will be given by half m omega square a square. Means at this time total energy will be equal to potential energy. Actually this is expression for total energy. Means at extreme position there will be no kinetic energy and we will have only energy in the form of potential energy. Okay. Point number 3. Now we will try to find out location where kinetic energy possessed by a particle is equal to potential energy of the particle. किनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया था? We just derived kinetic energy is equal to half m omega square into a square minus y square. And what about potential energy? It was half m omega square into y square. Is that okay? Now, just see here, we can cancel out half m omega square from both sides, which means that we can write down a square minus y square is equal to y square, which implies that a square is equal to 2y square. What I just did, I am just shifting y square on this side. This negative side will convert into positive. Y square plus y square is 2y square. Okay. Now, taking square root on both sides, which means that y is equal to a by under root 2. In fact, you may write down plus minus a by under root 2. Is it okay? Means
when displacement of the particle is 1 by root 2 times its amplitude, then kinetic energy and potential energy will be equal, means energy will be equally distributed in kinetic and potential energy when displacement is a by under root 2. Point number 4. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से सुनिए. जो किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हैं, दोनों ही ऑसिलेट करती हैं. प्लीज नोट माय वर्ड्स, एनर्जीज भी ऑसिलेट करती हैं, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से डबल रहती है. कैसे? हम लोगों ने अभी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लिखा था? पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. एक्चुअली आप चाहो तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इन टर्म्स ऑफ cos 2 omega t एक्सप्रेस कर सकते हो. कैसे? दिस मे बी रिटन एज 1 minus cos 2 omega t by 2. Same can be done for kinetic energy also. Now you see here, potential energy contains a term in which frequency is 2 omega instead of omega. It means that mathematically we should be able to understand that here potential energy will have a frequency double of the frequency of particle executing SHM. But the better way to understand is graphical method. Let us say we are drawing a graph in which along x-axis we have time and along y-axis we have energy. Okay, we will have all kinds of energy, kinetic, potential and total energy. I will start with a graph for potential energy of a particle executing SHM. Now notice that we have in this expression sine square omega t. Square means potential energy is not going to be negative at any time, means its value will be always positive at all times. It means that if I plot a graph for sine square omega t, expected graph for sine should be like this. Is it okay? And please notice that this time will be t by 4, this time will be t by 2, this time should be 3t by 4, and this is 4t by 4 means t, and so on. Is it okay? Now you can just notice that the time in which particle complete one oscillation, that is time period capital T, the oscillations completed by potential energy are 2, 1 and 2. It happens because potential energy will never get a negative value because of the square appearing in this expression. Okay, blue lines represent potential energy of a particle executing SHM. This is potential energy. Now let us try to draw a graph for kinetic energy. For kinetic energy, we have discussed EK is given by half m omega square a square cos square omega t. Here we have cos square, again square, means again kinetic energy will never be negative. That is also very basic definition of kinetic energy, that it should be always positive. Now if we draw expression for kinetic energy, then graph should be somewhat like this. Okay, all of you are aware of my drawing, but you should be able to understand the concept. Okay,
It should be smooth curve, but I am not able to draw it. But no problem, I think you will be able to understand. Now see here, at mean position, kinetic energy will be maximum, and at t by 4, kinetic energy will be minimum, that is at extreme position. Again, the time t in which particle completes one oscillation, kinetic energy will complete two oscillations. One, this is one, and this one is second. Okay. Now what about total energy? Total energy of this particle can be drawn by this line. As we have already discussed that total energy is independent of time. It remains constant at all times. It means that time period of total energy is infinite, that is, its frequency is 0. आप नोट कर सकते हो, लिखो the frequency of total energy of particle in SHM is 0. I repeat, the frequency of total energy of particle in SHM is 0. Fifth point, and will be last point, that is average value of kinetic energy and potential energy of a particle executing SHM. हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा था? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t. Now students, average value of sine square theta over one cycle is half. You need not to drive this. You can just remember, and you will drive it in +2. Especially non-medical students will drive. Medical students has to follow as such. Average value of sine square omega t over complete cycle over a cycle is 1 by 2. Means if I write down value of potential energy, in fact average value of potential energy, it will be half of half m omega square a square. That is, we can write down 1 by 4 m omega square a square. This is average value of potential energy. Similarly, without any further discussion, we can understand that average value of kinetic energy will be same, because in that expression we were having cos square omega t, and value of cos square omega t is also, average value of cos square omega t over a cycle is also 1 by 2. Means again average value of kinetic energy will be given by same expression, 1 by 4 m omega square a square. And if you add up these two, you will get total energy, and we know that total energy is constant at all times. When you will add these two, 1 by 4 plus 1 by 4 will be half m omega square a square. Okay. If you are not able to understand how to calculate average value of sine square omega t over a cycle, I can just give you a shortcut. We know that total energy is given by half m omega square a square. Now, half of this is kinetic energy and half of this is potential energy. Means अगर आप इसका हाफ कर देते हो, ये क्या बन जाएगा? 1 by 4. This will represent average kinetic energy as well as average potential energy. तो आप इतना याद रख लो कि टोटल एनर्जी का आधा हिस्सा एवरेज किनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और आधा हिस्सा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है.